आदाब एंड सलाम। अमिताभ जी वाला वो अपना आते ना जो केबीसी में, नमस्कार आदाब अभिनंदन आभार। बहरहाल अमिताभ जी तो एक बहुत ग्रेटेस्ट लेजेंड है और हम उनकी नकल नहीं उतार सकते। अब तो सॉरी सर, लेकिन बहुत जबरदस्त, हम तो उनके बड़े कदरदान हैं और बहुत शौक से उनकी फिल्में देखते हैं। तो उसके साथ ही हम अपने रिएक्शन परफेक्शन चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहते हैं और तमाम दर्शकों को हमारा नमस्कार। और अब हम वीडियो शुरू करने लगे। एक स्वागत करते हैं आपका रिएक्शन परफेक्शन में, हिंदी में बोलना स्वागत करते हैं। खुश आमदीद तो हमारे उर्दू का वर्ड है, आई थिंक उन लोगों को शायद समझ में ना ये बोला जाता है। हाँ, ये है कि कभी देखें एक हिंदी का वर्ड है धन्यवाद, मैंने सुना था, लेकिन अब शुक्रिया भी बोला जाता है वहाँ पे अक्सर। जाहिर है कि एक मल्टी लैंग्वेज असल में रीजन एक है ना। हाँ। रीजन एक है तो चीजें भी काफी सारी ऐसी जो कॉमन हो जाती हैं, सेम हो जाती हैं, समझ लेते हैं एक दूसरे की बात को। तो आज की वीडियो का टाइटल क्या है आप ये बताएं, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, लेकिन ये आप बताएंगे हमारे। द बिल्डिंग्स दैट मेड इंडिया। बिल्डिंग्स दैट मेड इंडिया, मतलब उन बिल्डिंग्स ने इंडिया बनाया या मतलब वो पहचान बनी। बिल्कुल अमेजिंग वीडियो लग रहा है, कुछ पता नहीं कि क्या है इसमें, लेकिन इसका टाइटल से तो हम बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या है इसमें, इसलिए ज्यादा देर नहीं करेंगे। और हमारे वीडियो को शुरू होने से पहले हम आपसे दोबारा कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम अपने वीडियो को भी दोबारा शुरू कर लें। हाँ, तो मेरे ख्याल से शुरू बिल्कुल करें वीडियो को। तो वीडियो जिस चैनल की है उस चैनल का नाम है द B1M। वाह, ये चैनल का नाम भी मुझे बड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है और ये जो वीडियो का टाइटल है ये भी बहुत ही अजीब लग रहा है। वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा कि इसका मतलब क्या है, द बिल्डिंग्स दैट मेड इंडिया। तो वीडियो को करते हैं गाइस स्टार्ट, 3 2 1 एंड स्टार्ट। At each stage of a country's history, buildings enable progression. In time, those structures begin to influence what comes next, standing as markers of a society's path through the ages, while shaping the direction of its future. Each representing a different part of the country's culture and evolution through history, from iconic mausoleums to the architecture of colonialism and new 21st century challenges. For better or worse, these are the buildings that made India. अब समझ में आ गई है मुझे जो कल्चरल प्लेसेस हैं जिनकी वजह से इंडिया का नाम है दुनिया में। मोहब्बत का नाम तो ताजमहल से ही। Construction on the main building began in demanding the skill of more than 20,000 masons, stonecutters and artisans from across the empire over an 11-year period. The completed structure sits among 42 acres of gardens. Designed with perfect symmetry, the Taj Mahal's domes, minaret towers and white marble exterior make it an iconic symbol of India and one of the world's most recognisable buildings to this day, attracting over 8 million visitors each year. 8 million visitors. With its vast railway network expanding, the Grand Victoria Terminus was constructed on the site of India's first rail terminal and opened in 1888. Standing at the heart of what was then called Bombay, the terminal marked Queen Victoria's Golden Jubilee and came to exemplify the long and complex history between the British Empire and the Indian subcontinent, where lavish buildings often rose alongside some of the empire's poorer subjects. When Bombay became Mumbai in 1995, the terminal was renamed a year later in honour of a former Indian emperor, removing its association with the country's colonial past. Today, the building stands as a landmark on India's 68,000-kilometre railway network, which conducts over 8 billion passenger journeys each year, and acts as the headquarters for India's Central Railway. Current circumstances aside, on average, some 3 million passengers pass through the terminal every 24 hours. In 1911, the decision was made to move India's capital away from what was then called Calcutta. An area of 16 square kilometres on the outskirts of Delhi was acquired by British authorities to house the governing district of what would go on to become New Delhi.
and a lavish new residence for the Viceroy of India was planned at its core. इंडियन पार्लियामेंट का एरिया जैसा होता है. With more than 300 families forcibly removed from the area to accommodate the new district, the project was seen as the latest British display of indifference towards the country's native citizens. With nationalist sentiments growing, the building's original European design was adapted to incorporate Indo-Saracenic motifs. Completed in 1929, the new Viceroy House became one of the largest residences for a head of state anywhere in the world, with more than 19,000 square metres of floor space in the main building alone. For comparison, the floor area of the White House is just over 5,000 square metres. When India gained independence in 1947, many former colonial buildings were repurposed. And with the first democratically elected president taking office in 1950, the building was renamed for the new republic. Once representing British oppression for many, the Rashtrapati Bhavan has been reclaimed by the Indian people and now stands as a symbol of the world's largest democracy. Symbol bhi hai, world largest democracy. Lotus Temple, New Delhi. Wow, Opera House. Four of the world's major religions, faith and beliefs have shaped the Indian subcontinent for centuries. The partition of India in 1947 and the subsequent resettling of 14 million people left the country with an overwhelming Hindu population. However, sizable communities of Muslims, Christians, Buddhists and Sikhs lived throughout the country, and in an effort to prevent religious conflict, the country officially became a secular state in 1976. Respecting India's diverse spiritual fabric, New Delhi's Lotus Temple was constructed in 1986, celebrating the Baha'i faith, a belief system that emphasises unity and allows followers of all religions to practice, worship and reflect within their temples. Consisting of 27 marble petals clustered to form the shape of a lotus flower, the temple's 9 entrances lead to a central prayer hall that is devoid of any paintings, statues or iconography. Having been visited by over 100 million people, the Lotus Temple is widely regarded as the defining modern architectural landmark of India, a key building in the country's new chapter of independence. In the 21st century, India's rapid industrialisation has lifted more than 271 million people out of poverty. However, it's also created an ultra-rich billionaire class, while more than 73 million people remain below the poverty line. Few buildings demonstrate the country's inequality more clearly than Antilia, a 27-storey, $2 billion home that is the most expensive private residence in the world. Completed in 2010, the home features 3 helipads, a 168-car garage, an 80-seat theatre, ballroom, terrace gardens, spa and a private temple, all run by some 600 staff. Deeply controversial from day one, Antilia required the demolition of an orphanage which had been on the site since 1895 and quickly came to symbolise what many saw as a lack of empathy from India's wealthy to the poor. Despite being widely criticised by Indian media and the Indian government's ongoing efforts to address the divide, private projects like Antilia are a stark reminder of the inequality that plagues the world's second most populated country. Each of these buildings speaks to a different aspect of this country's culture, rich history and development through the ages. Each era built buildings to support its progression, and those buildings have gone on to form India. If you enjoyed this video and would like to get more from the definitive video training construction, subscribe to the B1M. बहुत ज़बरदस्त वीडियो, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, और ये इंडिया की शान और इंडिया की पहचान, ये बिल्डिंग्स, यानी कि आप आगरा का ताजमहल ले लें, राष्ट्रपति भवन ले लें, या ये मुकेश अंबानी और एंटीलिया बिल्कुल, और बहुत ज़बरदस्त है। और जाहिर है कि किसी मुल्क के आइकन होते हैं ये दुनिया में पहचान के लिए कि इस कंट्री में ये चीज़ है, इस कंट्री में, जैसे पेरिस में, फ्रांस में एफिल टावर है, एक पहचान है उसकी।
या यूएसए में स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, उसकी पहचान है, उसकी पहचान तो सिडनी में भी है, सिडनी हार्बर, ओपरा हाउस है, ओपरा हाउस है, तो पहचान है। तो इंडिया की जो पहचान है वो ये बिल्डिंग्स हैं जो इन्होंने अपनी वीडियो में दिखाई है। बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत इम्प्रेसिव बिल्डिंग्स हैं, तारीखी हैं, हिस्टोरिकल है, उधर दुनिया जाती है, कितने मिलियंस लोग साल में वहाँ विजिट करते हैं। और ताजमहल को तो आप साइड पे ही करते हैं ना, उसका तो बिल्कुल कोई कंपैरेटर है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो क्या बोलते हैं, सेवन वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड शुमार होता है, और वो इंडिया को ये एहसास है कि ताजमहल इंडिया में है। हाँ, ये तो बड़ी एहसास की बात है उनके लिए कि एक वंडर 7 में से एक वंडर जो है वो इंडिया में मौजूद है। इंडिया का कंट्रीब्यूशन दुनिया में मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा है, आई थिंक। तो बहरहाल बहुत जबरदस्त वीडियो था, बहुत ही इम्प्रेस करने वाला वीडियो था। हमारा तो दिल करता है जाने का यार, अपना तो दिल कितनी वीडियो में बता चुका है, हमारा दिल्ली का दिल करता है, क्या करें यार, और दिल्ली करता है, साटा की करिए, मजबूरी है। तो भाई हालात ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से, हाँ, कोविड की वजह से तो हालात ही बहुत ज्यादा ऐसे। कोविड के अलावा भी जो हमारे आपस में जो चलता है, हम लोग तो यहाँ पे पीस के लिए बैठे हुए हैं, हाँ, लेकिन जो इस बारे में बात ही नहीं करनी, बस ये कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ज्यादा से ज्यादा फैला दें यार, और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें, उस पर अपने फोटोज दें और कोई लिंक दें, उस लिंक के साथ जब हम उस पर अपने रिएक्शन देंगे तो आपके उस फोटो को भी साथ में हम वीडियो के अंदर शो करेंगे कि यहाँ से इसने, ये हमारा सब्सक्राइबर है, इन्होंने हमें जो है ये भेजा है कि इस पर आप रिएक्शन दें। तो ये हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें। बिल्कुल, इंस्टाग्राम का जो वो लिंक है, यूजर नेम जो है वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं गाइस आपसे अगली वीडियो में। थोड़ा सा इस वीडियो में हमारी एनर्जी डाउन हुई क्योंकि इस वीडियो ने हमें डाउन कर दिया था ना, ऐसी जगह दिखाई है, हम लोग तो यहाँ पे सकते हैं, गुम हो जाते हैं, उस्ताद क्या दिखा रहा है यार ये, इस वजह से हमारा थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन हुआ था, लेकिन दोबारा से उसको बहाल कर लेते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मुझे अपना डायलॉग कंप्लीट करने दें, आप क्यों बीच में आप मुझे बार बार बोले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए